श्री हनुमान स्तोत्रम वंदे सिंदूरवर्णाभं लोहितांबरभूषितं रक्तांगरागशोभाढ्यं शोणापुच्छं कपीश्वरम् सुशंकितं सुकंठभुक्तवान् हि यो हितं वचस्त्वमाशु धैर्यमाश्रयात्र वो भयं कदापि न भजे समीरनंदनं सुभक्तचित्तरंजनं दिनेशरूपभक्षकं समस्तभक्तरक्षकं सुकंठकार्यसाधकं विपक्षपक्षबाधकं समुद्रपारगामिनं नमामि सिद्धकामिनं सुशंकितं सुकंठभुक्तवान् हि यो हितं वचस्त्वमाशु धैर्यमाश्रयात्र वो भयं कदापि न इति प्लवंगनाथ भाषितं निशम्य वानराधिनाथ आपशं तदा स रामदूत आश्रयः सुदीर्घबाहुलोचनेन पुच्छगुच्छशोभिना भुजद्वयेन स्वोदरीं निजांसयुग्ममास्थितौ कृतौ हि कोसलाधिपौ कपीशराजसन्निधौ विदेहजेशलक्ष्मणौ स मे शिवं करोत्वरम् सुशब्दशास्त्रपारगं विलोक्य रामचन्द्रमाह कपीशनाथ सेवकं समस्तनीतिमार्गगं प्रशस्य लक्ष्मणं प्रति प्रलम्बबाहुभूषितः कपीन्द्रसख्यमाकरोत् स्वकार्यसाधकः प्रभु प्रचण्डवेगधारिणं नगेन्द्रगर्वहारिणं फणीशमात्रगर्वहृदृशास्य वासनाश्रिकृत् विभीषणेन सख्यकृद् विदेहजातितापहृत् सुकण्ठकार्यसाधकं नमामि यातु धतकम् नमामि पुष्पमौलिनं सुवर्णवर्णधारिणं गदायुधेन भूषितं किरीटकुण्डलान्वितं सुपुच्छगुच्छतुच्छलङ्कदाहकं सुनायकं विपक्षपक्षराक्षसेन्द्र सर्ववंशनाशकम् रघुत्तमस्य सेवकं नमामि लक्ष्मणं प्रियं दिनेशवंशभूषणस्य मुद्रिकाप्रदर्शकं विदेहजातिशोकतापहारिणं प्रहारिणं सुसूक्ष्मरूपधारिणं नमामि दीर्घरूपिणम् नभस्वदात्मजेन भास्वता त्वया कृता महासहायया तया द्वयोरहितं ह्यभूत स्वकृत्यतः सुकण्ठ आपतारकां रघोत्तमो विदेहजां निपात्य वालिनं प्रभु सतो दशाननं खलम् इमं स्तवं कुजेयहनि यः पठेत सुचेतसा नरः कपीशनाथ सेवको भुनक्ति सर्वसंपदः प्लवंगराज सत्कृपा कटाक्षभाजनः सदा न शत्रुतोः भयं भवेत् कदापि तस्य नुस्त्विह नेत्रांगनंदधरणी वत्सरे अनंगवासरे लोकेश्वराख्य भट्टेन हनुमत्तांडवं कृतम् ओम इति श्री हनुमत्तांडव स्तोत्रम्। श्री हनुमान स्तोत्रम वंदे सिंदूरवर्णाभं लोहितांबरभूषितं रक्तांगरागशोभाढ्यं शोणापुच्छं कपीश्वरम् सुशंकितं सुकंठभुक्तवान् हि यो हितं वचस्त्वमाशु धैर्यमाश्रयात्र वो भयं कदापि न भजे समीरनंदनं सुभक्तचित्तरंजनं दिनेशरूपभक्षकं समस्तभक्तरक्षकं सुकंठकार्यसाधकं विपक्षपक्षबाधकं समुद्रपारगामिनं नमामि सिद्धकामिनं सुशंकितं सुकंठभुक्तवान् हि यो हितं वचस्त्वमाशु धैर्यमाश्रयात्र वो भयं कदापि न इति प्लवंगनाथ भाषितं निशम्य वानराधिनाथ आपशं तदा स रामदूत आश्रयः सुदीर्घबाहुलोचनेन पुच्छगुच्छशोभिना भुजद्वयेन स्वोदरीं निजांसयुग्ममास्थितौ कृतौ हि कोसलाधिपौ कपीशराजसन्निधौ विदेहजेशलक्ष्मणौ स मे शिवं करोत्वरम् सुशब्दशास्त्रपारगं विलोक्य रामचन्द्रमाह कपीशनाथ सेवकं समस्तनीतिमार्गगं प्रशस्य लक्ष्मणं प्रति प्रलम्बबाहुभूषितः कपीन्द्रसख्यमाकरोत् स्वकार्यसाधकः प्रभु प्रचण्डवेगधारिणं नगेन्द्रगर्वहारिणं फणीशमात्रगर्वहृदृशास्य वासनाश्रिकृत् विभीषणेन सख्यकृद् विदेहजातितापहृत् सुकण्ठकार्यसाधकं नमामि यातु धतकम् नमामि पुष्पमौलिनं सुवर्णवर्णधारिणं गदायुधेन भूषितं किरीटकुण्डलान्वितं सुपुच्छगुच्छतुच्छलङ्कदाहकं सुनायकं विपक्षपक्षराक्षसेन्द्र सर्ववंशनाशकम्
रघुत्तमस्य सेवकं नमामि लक्ष्मणं प्रियं दिनेशवंशभूषणस्य मुद्रिका प्रदर्शकं विदेह जातिशोकतापहारिणं प्रहारिणं सुसूक्ष्मरूपधारिणं नमामि दीर्घरूपिणम् नभस्वदात्मजेन भास्वता त्वया कृता महासहायया तया द्वयोर्हितं ह्य अभूत स्वकृत्यतः सुकण्ठ आपतारकां रघोत्तमो विदेहजां निपात्य वालिनं प्रभु सतो दशाननं खलम् इमं स्तवं कुजेयह्नियः पठेत सुचेतसा नरः कपीशनाथ सेवको भुनक्ति सर्वसंपदः प्लवंगराज सत्कृपा कटाक्ष भाजनः सदा न शत्रुतोः भयं भवेत कदापि तस्य नुस्त्विह नेत्रांगनंदधरणी वत्सरे अनंगवासरे लोकेश्वराख्य भट्टेन हनुमत्तांडवं कृतम् ओम इति श्री हनुमत्तांडव स्तोत्रम् श्री हनुमान स्तोत्रम् वंदे सिंदूरवर्णाभं लोहितांबरभूषितं रक्तांगरागशोभाढ्यं शोणापुच्छं कपीश्वरम् सुशंकितं सुकंठभुक्तवान् हि यो हितं वचस्त्वमाशु धैर्यमाश्रयात्र वो भयं कदापि न भजे समीरनंदनं सुभक्तचित्तरंजनं दिनेशरूपभक्षकं समस्तभक्तरक्षकं सुकंठकार्यसाधकं विपक्षपक्षबाधकं समुद्रपारगामिनं नमामि सिद्धकामिनम् सुशंकितं सुकंठभुक्तवान् हि यो हितं वचस्त्वमाशु धैर्यमाश्रयात्र वो भयं कदापि न इति प्लवंगनाथ भाषितं निशम्य वानराधिनाथ आपशं तदा स रामदूत आश्रयः सुदीर्घबाहुलोचनेन पुच्छगुच्छशोभिना भुजद्वयेन स्वोदरीं निजांसयुग्ममास्थितौ कृतौ हि कोसलाधिपौ कपीशराजसन्निधौ विदेहजेशलक्ष्मणौ स मे शिवं करोत्वरम् सुशब्दशास्त्रपारगं विलोक्य रामचन्द्रमाह कपीशनाथ सेवकं समस्तनीतिमार्गगम् प्रशस्य लक्ष्मणं प्रति प्रलम्बबाहुभूषितः कपीन्द्रसख्यमाकरोत् स्वकार्यसाधकः प्रभु प्रचण्डवेगधारिणं नगेन्द्रगर्वहारिणं फणीशमात्रगर्वहृदृशास्य वासनाश्रिकृत् विभीषणेन सख्यकृद् विदेहजातितापहृत् सुकण्ठकार्यसाधकं नमामि यातु धतकम् नमामि पुष्पमौलिनं सुवर्णवर्णधारिणं गदायुधेन भूषितं किरीटकुण्डलान्वितं सुपुच्छगुच्छतुच्छलङ्कदाहकं सुनायकं विपक्षपक्षराक्षसेन्द्र सर्ववंशनाशकम् रघुत्तमस्य सेवकं नमामि लक्ष्मणं प्रियं दिनेशवंशभूषणस्य मुद्रिका प्रदर्शकं विदेहजातिशोकतापहारिणं प्रहारिणं सुसूक्ष्मरूपधारिणं नमामि दीर्घरूपिणम् नभस्वदात्मजेन भास्वता त्वया कृता महासहायया तया द्वयोर्हितं ह्य अभूत स्वकृत्यतः सुकण्ठ आपतारकां रघोत्तमो विदेहजां निपात्य वालिनं प्रभु सतो दशाननं खलम् इमं स्तवं कुजेयह्नियः पठेत सुचेतसा नरः कपीशनाथ सेवको भुनक्ति सर्वसंपदः प्लवंगराज सत्कृपा कटाक्ष भाजनः सदा न शत्रुतोः भयं भवेत कदापि तस्य नुस्त्विह नेत्रांगनंदधरणी वत्सरे अनंगवासरे लोकेश्वराख्य भट्टेन हनुमत्तांडवं कृतम् ओम इति श्री हनुमत्तांडव स्तोत्रम् श्री हनुमान स्तोत्रम् वंदे सिंदूरवर्णाभं लोहितांबरभूषितं रक्तांगरागशोभाढ्यं शोणापुच्छं कपीश्वरम् सुशंकितं सुकंठभुक्तवान् हि यो हितं वचस्त्वमाशु धैर्यमाश्रयात्र वो भयं कदापि न भजे समीरनंदनं सुभक्तचित्तरंजनं दिनेशरूपभक्षकं समस्तभक्तरक्षकं सुकंठकार्यसाधकं विपक्षपक्षबाधकं समुद्रपारगामिनं नमामि सिद्धकामिनम् सुशंकितं सुकंठभुक्तवान् हि यो हितं वचस्त्वमाशु धैर्यमाश्रयात्र वो भयं कदापि न इति प्लवंगनाथ भाषितं निशम्य वानराधिनाथ आपशं तदा स रामदूत आश्रयः
सुदीर्घबाहुलोचनेन पुच्छगुच्छशोभिना भुजद्वयेन स्वोदरीं निजांसयुग्ममास्थितौ कृतौ हि कोसलाधिपौ कपीशराजसन्निधौ विदेहजेशलक्ष्मणौ स मे शिवं करोत्वरम्। सुशब्दशास्त्रपारगं विलोक्य रामचन्द्रमाह कपीशनाथसेवकं समस्तनीतिमार्गगं प्रशस्य लक्ष्मणं प्रति प्रलम्बबाहुभूषितः कपीन्द्रसख्यमाकरोत् स्वकार्यसाधकः प्रभुः। प्रचण्डवेगधारिणं नगेन्द्रगर्वहारिणं फणीशमात्रगर्वहृदृशास्य वासनाश्रिकृत् विभीषणेन सख्यकृद् विदेहजातितापहृत् सुकण्ठकार्यसाधकं नमामि यातुधतकम्। नमामि पुष्पमौलिनं सुवर्णवर्णधारिणं गदायुधेन भूषितं किरीटकुण्डलान्वितं सुपुच्छगुच्छतुच्छलङ्कदाहकं सुनायकं विपक्षपक्षराक्षसेन्द्रसर्ववंशनाशकम्। रघुत्तमस्य सेवकं नमामि लक्ष्मणं प्रियं दिनेशवंशभूषणस्य मुद्रिकाप्रदर्शकं विदेहजातिशोकतापहारिणं प्रहारिणं सुसूक्ष्मरूपधारिणं नमामि दीर्घरूपिणम्। नभस्वदात्मजेन भास्वता त्वया कृता महासहायया तया द्वयोर्हितं ह्य अभूत स्वकृत्यतः सुकण्ठ आपतारकां रघोत्तमो विदेहजां निपात्य वालिनं प्रभु सतो दशाननं खलम्। इमं स्तवं कुजेयह्नि पठेत सुचेतसा नरः कपीशनाथसेवको भुनक्ति सर्वसम्पदः प्लवंगराज सत्कृपा कटाक्षभाजनः सदा न शत्रुतोः भयं भवेत् कदापि तस्य नुस्त्विह। नेत्रांगनंदधरणी वत्सरे अनंगवासरे लोकेश्वराख्यभट्टेन हनुमत्तांडवं कृतम्। ओम इति श्री हनुमत्तांडव स्तोत्रम्। श्री हनुमान स्तोत्रम्। वंदे सिंदूरवर्णाभं लोहितांबरभूषितं रक्तांगरागशोभाढ्यं शोणापुच्छं कपीश्वरम् सुशंकितं सुकण्ठभुक्तवान् हि यो हितं वचस्त्वमाशु धैर्यमाश्रयात्र वो भयं कदापि न। भजे समीरनन्दनं सुभक्तचित्तरञ्जनं दिनेशरूपभक्षकं समस्तभक्तरक्षकं सुकण्ठकार्यसाधकं विपक्षपक्षबाधकं समुद्रपारगामिनं नमामि सिद्धकामिनम्। सुशंकितं सुकण्ठभुक्तवान् हि यो हितं वचस्त्वमाशु धैर्यमाश्रयात्र वो भयं कदापि न। इति प्लवंगनाथभाषितं निशम्य वानराधिनाथ आपशं तदा स रामदूत आश्रयः। सुदीर्घबाहुलोचनेन पुच्छगुच्छशोभिना भुजद्वयेन स्वोदरीं निजांसयुग्ममास्थितौ कृतौ हि कोसलाधिपौ कपीशराजसन्निधौ विदेहजेशलक्ष्मणौ स मे शिवं करोत्वरम्। सुशब्दशास्त्रपारगं विलोक्य रामचन्द्रमाह कपीशनाथसेवकं समस्तनीतिमार्गगं प्रशस्य लक्ष्मणं प्रति प्रलम्बबाहुभूषितः कपीन्द्रसख्यमाकरोत् स्वकार्यसाधकः प्रभुः। प्रचण्डवेगधारिणं नगेन्द्रगर्वहारिणं फणीशमात्रगर्वहृदृशास्य वासनाश्रिकृत् विभीषणेन सख्यकृद् विदेहजातितापहृत् सुकण्ठकार्यसाधकं नमामि यातुधतकम्। नमामि पुष्पमौलिनं सुवर्णवर्णधारिणं गदायुधेन भूषितं किरीटकुण्डलान्वितं सुपुच्छगुच्छतुच्छलङ्कदाहकं सुनायकं विपक्षपक्षराक्षसेन्द्रसर्ववंशनाशकम्। रघुत्तमस्य सेवकं नमामि लक्ष्मणं प्रियं दिनेशवंशभूषणस्य मुद्रिकाप्रदर्शकं विदेहजातिशोकतापहारिणं प्रहारिणं सुसूक्ष्मरूपधारिणं नमामि दीर्घरूपिणम्। नभस्वदात्मजेन भास्वता त्वया कृता महासहायया तया द्वयोर्हितं ह्य अभूत स्वकृत्यतः सुकण्ठ आपतारकां रघोत्तमो विदेहजां निपात्य वालिनं प्रभु सतो दशाननं खलम्। इमं स्तवं कुजेयह्नि पठेत सुचेतसा नरः कपीशनाथसेवको भुनक्ति सर्वसम्पदः प्लवंगराज सत्कृपा कटाक्षभाजनः सदा न शत्रुतोः भयं भवेत् कदापि तस्य नुस्त्विह। नेत्रांगनंदधरणी वत्सरे अनंगवासरे लोकेश्वराख्यभट्टेन हनुमत्तांडवं कृतम्। ओम इति श्री हनुमत्तांडव स्तोत्रम्।
श्री हनुमान स्तोत्रम वंदे सिंदूरवर्णाभं लोहितांबरभूषितं रक्तांगरागशोभाढ्यं शोणापुच्छं कपीश्वरम् सुशंकितं सुकंठभुक्तवान् हि यो हितं वचस्त्वमाशु धैर्यमाश्रयात्र वो भयं कदापि न भजे समीरनंदनं सुभक्तचित्तरंजनं दिनेशरूपभक्षकं समस्तभक्तरक्षकं सुकंठकार्यसाधकं विपक्षपक्षबाधकं समुद्रपारगामिनं नमामि सिद्धकामिनम् सुशंकितं सुकंठभुक्तवान् हि यो हितं वचस्त्वमाशु धैर्यमाश्रयात्र वो भयं कदापि न इति प्लवंगनाथ भाषितं निशम्य वानराधिनाथ आपशं तदा स रामदूत आश्रयः सुदीर्घबाहुलोचनेन पुच्छगुच्छशोभिना भुजद्वयेन स्वोदरीं निजांसयुग्ममास्थितौ कृतौ हि कोसलाधिपौ कपीशराजसन्निधौ विदेहजेशलक्ष्मणौ स मे शिवं करोत्वरम् सुशब्दशास्त्रपारगं विलोक्य रामचन्द्रमाह कपीशनाथसेवकं समस्तनीतिमार्गगम् प्रशस्य लक्ष्मणं प्रति प्रलम्बबाहुभूषितः कपीन्द्रसख्यमाकरोत् स्वकार्यसाधकः प्रभुः प्रचण्डवेगधारिणं नगेन्द्रगर्वहारिणं फणीशमात्रगर्वहृदृशास्य वासनाश्रिकृत् विभीषणेन सख्यकृद् विदेहजातितापहृत् सुकण्ठकार्यसाधकं नमामि यातु धतकम् नमामि पुष्पमौलिनं सुवर्णवर्णधारिणं गदायुधेन भूषितं किरीटकुण्डलान्वितं सुपुच्छगुच्छतुच्छलङ्कदाहकं सुनायकं विपक्षपक्षराक्षसेन्द्रसर्ववंशनाशकम् रघुत्तमस्य सेवकं नमामि लक्ष्मणं प्रियं दिनेशवंशभूषणस्य मुद्रिकाप्रदर्शकं विदेहजातिशोकतापहारिणं प्रहारिणं सुसूक्ष्मरूपधारिणं नमामि दीर्घरूपिणम् नभस्वदात्मजेन भास्वता त्वया कृता महासहायया तया द्वयोर्हितं ह्य अभूत स्वकृत्यतः सुकण्ठ आपतारकां रघोत्तमो विदेहजां निपात्य वालिनं प्रभु सतो दशाननं खलम् इमं स्तवं कुजेयहनि यः पठेत सुचेतसा नरः कपीशनाथ सेवको भुनक्ति सर्वसंपदः प्लवंगराज सत्कृपा कटाक्षभाजनः सदा न शत्रुतोः भयं भवेत् कदापि तस्य नुस्त्विह नेत्रांगनंदधरणी वत्सरे अनंगवासरे लोकेश्वराख्य भट्टेन हनुमत्तांडवं कृतम् ओम इति श्री हनुमत्तांडव स्तोत्रम् श्री हनुमान स्तोत्रम् वंदे सिंदूरवर्णाभं लोहितांबरभूषितं रक्तांगरागशोभाढ्यं शोणापुच्छं कपीश्वरम् सुशंकितं सुकंठभुक्तवान् हि यो हितं वचस्त्वमाशु धैर्यमाश्रयात्र वो भयं कदापि न भजे समीरनंदनं सुभक्तचित्तरंजनं दिनेशरूपभक्षकं समस्तभक्तरक्षकं सुकंठकार्यसाधकं विपक्षपक्षबाधकं समुद्रपारगामिनं नमामि सिद्धकामिनम् सुशंकितं सुकंठभुक्तवान् हि यो हितं वचस्त्वमाशु धैर्यमाश्रयात्र वो भयं कदापि न इति प्लवंगनाथ भाषितं निशम्य वानराधिनाथ आपशं तदा स रामदूत आश्रयः सुदीर्घबाहुलोचनेन पुच्छगुच्छशोभिना भुजद्वयेन स्वोदरीं निजांसयुग्ममास्थितौ कृतौ हि कोसलाधिपौ कपीशराजसन्निधौ विदेहजेशलक्ष्मणौ स मे शिवं करोत्वरम् सुशब्दशास्त्रपारगं विलोक्य रामचन्द्रमाह कपीशनाथसेवकं समस्तनीतिमार्गगम् प्रशस्य लक्ष्मणं प्रति प्रलम्बबाहुभूषितः कपीन्द्रसख्यमाकरोत् स्वकार्यसाधकः प्रभुः प्रचण्डवेगधारिणं नगेन्द्रगर्वहारिणं फणीशमात्रगर्वहृदृशास्य वासनाश्रिकृत् विभीषणेन सख्यकृद् विदेहजातितापहृत् सुकण्ठकार्यसाधकं नमामि यातु धतकम् नमामि पुष्पमौलिनं सुवर्णवर्णधारिणं गदायुधेन भूषितं किरीटकुण्डलान्वितं सुपुच्छगुच्छतुच्छलङ्कदाहकं सुनायकं विपक्षपक्षराक्षसेन्द्रसर्ववंशनाशकम्
रघुत्तमस्य सेवकं नमामि लक्ष्मणं प्रियं दिनेशवंशभूषणस्य मुद्रिका प्रदर्शकं विदेहजातिशोकतापहारिणं प्रहारिणं सुसूक्ष्मरूपधारिणं नमामि दीर्घरूपिणम् नभस्वदात्मजेन भास्वता त्वया कृता महासहायया तया द्वयोरहितं ह्य अभूत स्वकृत्यतः सुकण्ठ आपतारकां रघोत्तमो विदेहजां निपात्य वालिनं प्रभु सतो दशाननं खलम् इमं स्तवं कुजेयह्नि पठेत सुचेतसा नरः कपीशनाथ सेवको भुनक्ति सर्वसंपदः प्लवंगराज सत्कृपा कटाक्ष भाजनः सदा न शत्रुतोः भयं भवेत कदापि तस्य नुस्त्विह नेत्रांगनंदधरणी वत्सरे अनंगवासरे लोकेश्वराख्य भट्टेन हनुमत्तांडवं कृतम् ओम इति श्री हनुमत्तांडव स्तोत्रम् श्री हनुमान स्तोत्रम वंदे सिंदूरवर्णाभं लोहितांबरभूषितं रक्तांगरागशोभाढ्यं शोणापुच्छं कपीश्वरम् सुशंकितं सुकंठभुक्तवान् हि यो हितं वचस्त्वमाशु धैर्यमाश्रयात्र वो भयं कदापि न भजे समीरनंदनं सुभक्तचित्तरंजनं दिनेशरूपभक्षकं समस्तभक्तरक्षकं सुकंठकार्यसाधकं विपक्षपक्षबाधकं समुद्रपारगामिनं नमामि सिद्धकामिनं सुशंकितं सुकंठभुक्तवान् हि यो हितं वचस्त्वमाशु धैर्यमाश्रयात्र वो भयं कदापि न इति प्लवंगनाथ भाषितं निशम्य वानराधिनाथ आपशं तदा स रामदूत आश्रयः सुदीर्घबाहुलोचनेन पुच्छगुच्छशोभिना भुजद्वयेन स्वोदरीं निजांसयुग्ममास्थितौ कृतौ हि कोसलाधिपौ कपीशराजसन्निधौ विदेहजेशलक्ष्मणौ स मे शिवं करोत्वरम् सुशब्दशास्त्रपारगं विलोक्य रामचन्द्रमाह कपीशनाथ सेवकं समस्तनीतिमार्गगम् प्रशस्य लक्ष्मणं प्रति प्रलम्बबाहुभूषितः कपीन्द्रसख्यमाकरोत् स्वकार्यसाधकः प्रभु प्रचण्डवेगधारिणं नगेन्द्रगर्वहारिणं फणीशमात्रगर्वहृदृशास्य वासनाश्रिकृत विभीषणेन सख्यकृत विदेहजातितापहृत सुकण्ठकार्यसाधकं नमामि यातु धतकम् नमामि पुष्पमौलिनं सुवर्णवर्णधारिणं गदायुधेन भूषितं किरीटकुण्डलान्वितं सुपुच्छगुच्छतुच्छलङ्कदाहकं सुनायकं विपक्षपक्षराक्षसेन्द्र सर्ववंशनाशकम् रघुत्तमस्य सेवकं नमामि लक्ष्मणं प्रियं दिनेशवंशभूषणस्य मुद्रिका प्रदर्शकं विदेहजातिशोकतापहारिणं प्रहारिणं सुसूक्ष्मरूपधारिणं नमामि दीर्घरूपिणम् नभस्वदात्मजेन भास्वता त्वया कृता महासहायया तया द्वयोरहितं ह्य अभूत स्वकृत्यतः सुकण्ठ आपतारकां रघोत्तमो विदेहजां निपात्य वालिनं प्रभु सतो दशाननं खलम् इमं स्तवं कुजेयह्नि पठेत सुचेतसा नरः कपीशनाथ सेवको भुनक्ति सर्वसंपदः प्लवंगराज सत्कृपा कटाक्ष भाजनः सदा न शत्रुतोः भयं भवेत कदापि तस्य नुस्त्विह नेत्रांगनंदधरणी वत्सरे अनंगवासरे लोकेश्वराख्य भट्टेन हनुमत्तांडवं कृतम् ओम इति श्री हनुमत्तांडव स्तोत्रम् श्री हनुमान स्तोत्रम वंदे सिंदूरवर्णाभं लोहितांबरभूषितं रक्तांगरागशोभाढ्यं शोणापुच्छं कपीश्वरम् सुशंकितं सुकंठभुक्तवान् हि यो हितं वचस्त्वमाशु धैर्यमाश्रयात्र वो भयं कदापि न भजे समीरनंदनं सुभक्तचित्तरंजनं दिनेशरूपभक्षकं समस्तभक्तरक्षकं सुकंठकार्यसाधकं विपक्षपक्षबाधकं समुद्रपारगामिनं नमामि सिद्धकामिनं सुशंकितं सुकंठभुक्तवान् हि यो हितं वचस्त्वमाशु धैर्यमाश्रयात्र वो भयं कदापि न इति प्लवंगनाथ भाषितं निशम्य वानराधिनाथ आपशं तदा स रामदूत आश्रयः
सुदीर्घबाहुलोचनेन पुच्छगुच्छशोभिना भुजद्वयेन स्वोदरीं निजांसयुग्ममास्थितौ कृतौ हि कोसलाधिपौ कपीशराजसन्निधौ विदेहजेशलक्ष्मणौ स मे शिवं करोत्वरम्। सुशब्दशास्त्रपारगं विलोक्य रामचन्द्रमाह कपीशनाथ सेवकं समस्तनीतिमार्गगम् प्रशस्य लक्ष्मणं प्रति प्रलम्बबाहुभूषितः कपीन्द्रसख्यमाकरोत् स्वकार्यसाधकः प्रभु। प्रचण्डवेगधारिणं नगेन्द्रगर्वहारिणं फणीशमात्रगर्वहृदृशास्य वासनाश्रिकृत् विभीषणेन सख्यकृद् विदेहजातितापहृत् सुकण्ठकार्यसाधकं नमामि यातुधतकम्। नमामि पुष्पमौलिनं सुवर्णवर्णधारिणं गदायुधेन भूषितं किरीटकुण्डलान्वितं सुपुच्छगुच्छतुच्छलङ्कदाहकं सुनायकं विपक्षपक्षराक्षसेन्द्रसर्ववंशनाशकम्। रघुत्तमस्य सेवकं नमामि लक्ष्मणं प्रियं दिनेशवंशभूषणस्य मुद्रिकाप्रदर्शकं विदेहजातिशोकतापहारिणं प्रहारिणं सुसूक्ष्मरूपधारिणं नमामि दीर्घरूपिणम्। नभस्वदात्मजेन भास्वता त्वया कृता महासहायया तया द्वयोर्हितं ह्य अभूत स्वकृत्यतः सुकण्ठ आपतारकां रघोत्तमो विदेहजां निपात्य वालिनं प्रभु सतो दशाननं खलम्। इमं स्तवं कुजेऽह्नि यः पठेत सुचेतसा नरः कपीशनाथ सेवको भुनक्ति सर्वसम्पदः प्लवंगराज सत्कृपा कटाक्षभाजनः सदा न शत्रुतोः भयं भवेत् कदापि तस्य नुस्त्विह। नेत्रांगनंदधरणी वत्सरे अनंगवासरे लोकेश्वराख्य भट्टेन हनुमत्तांडवं कृतम्। ओम इति श्री हनुमत्तांडव स्तोत्रम्। श्री हनुमान स्तोत्रम्। वंदे सिंदूरवर्णाभं लोहितांबरभूषितं रक्तांगरागशोभाढ्यं शोणापुच्छं कपीश्वरम् सुशंकितं सुकण्ठभुक्तवान् हि यो हितं वचस्त्वमाशु धैर्यमाश्रयात्र वो भयं कदापि न। भजे समीरनन्दनं सुभक्तचित्तरञ्जनं दिनेशरूपभक्षकं समस्तभक्तरक्षकं सुकण्ठकार्यसाधकं विपक्षपक्षबाधकं समुद्रपारगामिनं नमामि सिद्धकामिनम्। सुशंकितं सुकण्ठभुक्तवान् हि यो हितं वचस्त्वमाशु धैर्यमाश्रयात्र वो भयं कदापि न। इति प्लवंगनाथ भाषितं निशम्य वानराधिनाथ आपशं तदा स रामदूत आश्रयः सुदीर्घबाहुलोचनेन पुच्छगुच्छशोभिना भुजद्वयेन स्वोदरीं निजांसयुग्ममास्थितौ कृतौ हि कोसलाधिपौ कपीशराजसन्निधौ विदेहजेशलक्ष्मणौ स मे शिवं करोत्वरम्। सुशब्दशास्त्रपारगं विलोक्य रामचन्द्रमाह कपीशनाथ सेवकं समस्तनीतिमार्गगम् प्रशस्य लक्ष्मणं प्रति प्रलम्बबाहुभूषितः कपीन्द्रसख्यमाकरोत् स्वकार्यसाधकः प्रभु। प्रचण्डवेगधारिणं नगेन्द्रगर्वहारिणं फणीशमात्रगर्वहृदृशास्य वासनाश्रिकृत् विभीषणेन सख्यकृद् विदेहजातितापहृत् सुकण्ठकार्यसाधकं नमामि यातुधतकम्। नमामि पुष्पमौलिनं सुवर्णवर्णधारिणं गदायुधेन भूषितं किरीटकुण्डलान्वितं सुपुच्छगुच्छतुच्छलङ्कदाहकं सुनायकं विपक्षपक्षराक्षसेन्द्रसर्ववंशनाशकम्। रघुत्तमस्य सेवकं नमामि लक्ष्मणं प्रियं दिनेशवंशभूषणस्य मुद्रिकाप्रदर्शकं विदेहजातिशोकतापहारिणं प्रहारिणं सुसूक्ष्मरूपधारिणं नमामि दीर्घरूपिणम्। नभस्वदात्मजेन भास्वता त्वया कृता महासहायया तया द्वयोर्हितं ह्य अभूत स्वकृत्यतः सुकण्ठ आपतारकां रघोत्तमो विदेहजां निपात्य वालिनं प्रभु सतो दशाननं खलम्। इमं स्तवं कुजेऽह्नि यः पठेत सुचेतसा नरः कपीशनाथ सेवको भुनक्ति सर्वसम्पदः प्लवंगराज सत्कृपा कटाक्षभाजनः सदा न शत्रुतोः भयं भवेत् कदापि तस्य नुस्त्विह। नेत्रांगनंदधरणी वत्सरे अनंगवासरे लोकेश्वराख्य भट्टेन हनुमत्तांडवं कृतम्। ओम इति श्री हनुमत्तांडव स्तोत्रम्।
श्री हनुमान स्तोत्रम वंदे सिंदूरवर्णाभं लोहितांबरभूषितं रक्तांगराग शोभाढ्यं शोणापुच्छं कपीश्वरम् सुशंकितं सुकंठ भुक्तवान हि यो हितं वचस्त्वमाशु धैर्यमाश्रयात्र वो भयं कदापि न भजे समीर नंदनम सुभक्त चित्तरंजनम दिनेश रूप भक्षकम समस्त भक्त रक्षकम सुकंठ कार्य साधकम विपक्ष पक्ष बाधकम समुद्र पार गामिनम नमामि सिद्ध कामिनम सुशंकितं सुकंठ भुक्तवान हि यो हितं वचस्त्वमाशु धैर्यमाश्रयात्र वो भयं कदापि न इति प्लवंगनाथ भाषितं निशम्य वानराधिनाथ आपशं तदा स रामदूत आश्रयः सुदीर्घ बाहुलोचनेन पुच्छगुच्छ शोभिना भुजद्वयेन स्वोदरीं निजांस युग्ममास्थितौ कृतौ हि कोसलाधिपौ कपीशराजसन्निधौ विदेहजेश लक्ष्मणौ स मे शिवं करोत्वरम् सुशब्द शास्त्र पारगम विलोक्य रामचंद्रमाह कपीशनाथ सेवकम समस्त नीति मार्गगम प्रशस्य लक्ष्मणं प्रति प्रलंब बाहुभूषितः कपीन्द्र सख्यमाकरोत् स्वकार्य साधकः प्रभु प्रचंड वेगधारिणं नगेन्द्र गर्वहारिणं फणीश मात्र गर्वहृदृशास्य वासनाश्रिकृत विभीषणेन सख्यकृत विदेह जाति तापहृत सुकंठ कार्य साधकम नमामि यातु धतकम नमामि पुष्पमौलिनं सुवर्णवर्णधारिणं गदायुधेन भूषितं किरीटकुण्डलान्वितं सुपुच्छगुच्छतुच्छलङ्कदाहकं सुनायकं विपक्षपक्ष राक्षसेन्द्र सर्ववंशनाशकम् रघुत्तमस्य सेवकं नमामि लक्ष्मणं प्रियं दिनेशवंशभूषणस्य मुद्रिका प्रदर्शकं विदेह जाति शोकतापहारिणं प्रहारिणं सुसूक्ष्मरूपधारिणं नमामि दीर्घरूपिणम् नभस्वदात्मजेन भास्वता त्वया कृता महासहायया तया द्वयोरहितं ह्य अभूत स्वकृत्यतः सुकंठ आपतारकां रघोत्तमो विदेहजां निपात्य वालिनं प्रभु सतो दशाननं खलम् इमं स्तवं कुजेयहनि यः पठेत सुचेतसा नरः कपीशनाथ सेवको भुनक्ति सर्वसंपदः प्लवंगराज सत्कृपा कटाक्ष भाजनः सदा न शत्रुतोः भयं भवेत कदापि तस्य नुस्त्विह नेत्रांगनंदधरणी वत्सरे अनंगवासरे लोकेश्वराख्य भट्टेन हनुमत्तांडवं कृतम् ओम इति श्री हनुमत्तांडव स्तोत्रम्।